Hello, dear students. Very good morning. And I have discussed in the last class about method of partial fraction and solve few problems. To continue with this, I am going to solve more problems related to this particular topic in this class. Okay. Here I am consider a particular question. The question is integration x plus 1 divided by x minus 1 into x square plus 1. That is, whenever you are going to solve equations, your observation towards the problem is very important. If you must be a very good observer. Okay, what is your rational polynomial function? ये कौन सा टाइप में है? That's very important. Here you see numerator is a linear factor. Okay, so its degree is 1 and denominator is what? Linear into quadratic, and this quadratic cannot be factorized. So you got a particular rule px square plus qx plus r divided by what? X minus a into x square plus bx plus, in the last class I have discussed. So what is the rule? A by linear, and the rule is bx plus c divided by quadratic, and this quadratic figure cannot be factorized. So here आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा, सपोज दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट इज़ ए लिनियर. व्हाट इज p and q? p and pq are some real numbers. if p becomes 0, p 0 भी हो सकता है, p 0 हो जाए तो ये लिनियर हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है. तो डोंट प्रॉब्लम. सपोज qx प्लस r डिवाइड बाई दिस, यू कैन राइट दिस ऑल्सो. ठीक है. सो आई एम यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर रूल हियर इन दिस पर्टिकुलर केस. सो a बाई लिनियर bx plus c by quadratic. ठीक है. and after taking LCM, if we take LCM in the right hand side, the x minus 1 into x square plus 1 will be the LCM, and a into x square plus 1 plus bx plus c into x minus 1 will be in the numerator, and after cancelling the denominator you will get numerator in the left hand side is equal to numerator in the right hand side. Okay, now our main job is to find the constant a, b, c. There are three constants here in that particular expression. Remember one thing, I am going to discuss this problem because any type of problem numerator by linear into quadratic, नीचे linear और quadratic हो, ऊपर में जो भी हो, quadratic भी हो सकता है, linear भी हो सकता है, constant भी हो सकता है, whatever be. For every cases the rule of finding the constant is same. So remember this rule. फर्स्ट योर एम इज़ टू फाइंड व्हाट? कांस्टेंट ए. जब कांस्टेंट ए निकालना है तो पूरी टर्म को, ये टर्म को क्या बनाना है? ज़ीरो बनाना होगा. कैसे ज़ीरो बनाएंगे? आप उस फैक्टर को देखिए, ये फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी. सो व्हाट विल डू? पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 1. सो उस फैक्टर के हिसाब से एक्स का वैल्यू क्या बनी? सो एक्स माइनस 1 है तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कराओ. दूसरा कुछ होगा तो दूसरा पुट करेंगे. तो ये पहला स्टेप है. स्टेप 1 क्या है? putting x equal to 1. Why x equal to 1? Because of this factor. अलग अलग प्रॉब्लम में ये फैक्टर अलग अलग होगा, तो इस हिसाब से पुट करेंगे. तो इसमें x इक्वल 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? 2 हो रहा है. राइट हैंड साइड ये तो 0 हो जा रहा है, तो इसमें 1 पुट करें. 1 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 2 इंटू ए ट्वाइस है. एंड फाइनली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इक्वल व्हाट? 1. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Then next step is always putting x equal to 0. In any type of problem, what we will do? Putting x is equal to what? 0. So next, putting without any hesitation, putting x equal to 0. Putting x is equal to 0 करें तो क्या हो रहा है? इसमें 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रहा है? 1 हो रहा है. राइट हैंड साइड में ये क्या हो रहा है? 0 प्लस 1 इंटू ए मीन्स ए हो रहा है. इसमें अगर 0 पुट करें तो 0 इंटू बी 0 हो रहा है, तो खाली क्या रहेगा? सी रहेगा. और इसमें 0 पुट करें तो क्या होगा? 0 माइनस 1, इसमें माइनस 1 इसमें सी रहेगा, इसमें माइनस 1 रहेगा. सी इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट? माइनस सी. सो हाउ you get an equation related to what? A and C. You know A. So putting the value of A you will get, so 1 cancel and C becomes what? 0. Okay, C become what? 0. Now your job is to find B. इन सच केसेस द फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड. फर्स्ट स्टेप में उस फैक्टर के हिसाब से x का वैल्यू पुट करेंगे, एंड देन पुटिंग x इक्वल टू 0 विदाउट एनी हेजिटेशन
This is the second step in any problem. Every problem you have to putting x is equal to 0. Second step. And third step is comparing the coefficient of x square. You see, this is equal to this. This is an identity. When an expression becomes an identity, then coefficient of the term, whatever be the x or x square or constant term, will be same from the left hand side to right hand side. Now here the coefficient of x square, I am considering what very important is the coefficient of x. So लिखेंगे comparing the coefficient of x square on both sides, दोनों साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यू सी देयर इज नो टर्म, सो यू कैन राइट 0 इंटू एक्स स्क्वायर. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिख सकते हो? 0 इंटू एक्स स्क्वायर. क्लियर? सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द लेफ्ट हैंड साइड? इट इज 0. नाउ गो टू द राइट हैंड साइड. थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? यस, वेरी इजी फॉर यू. तो ये एक टर्म होगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, एंड इफ यू मल्टीप्लाई बी एक्स विथ दिस एक्स, यू आर गेटिंग बी एक्स स्क्वायर. बीच में प्लस है, बी एक्स स्क्वायर. तो इस एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले ले तो क्या होगा? ए प्लस बी इंटू वाट? एक्स स्क्वायर. ओके, तो इन द राइट हैंड साइड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? इट इज ए प्लस बी. तो दोनों सेम होगा बिकॉज इट इज एन आइडेंटिटी. सो फाइनली बी इक्वल टू वाट? माइनस ए. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वैल्यू ऑफ ए यू गॉट व्हाट? 1. वैल्यू ए का वैल्यू कितना था? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1. So you put 1 equal to minus 1. So finally the value of a is 1, b is minus 1, and c equal to what? 0. Now go to the integration. So this is your particular term which is resolved into a partial fraction. Okay. So take integration. Integration x plus 1 divided by x minus 1 into x square plus 1 dx. Today is very hot, very scorching heat is there. And what is a? A is equal to what? 1. So 1 by x minus 1. उसमें भी इंटीग्रल लगाओ dx. Plus what is the value of b? b equal to what? Minus 1. So minus x. And what is the value of c? c equal to what? 0. तो 0 हो जाएगा, खाली माइनस x रहेगा. नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, नाउ दिस इंटीग्रल इज वेरी सिंपल. लॉग मॉडुलस x minus 1. And here I will do what? One thing, माइनस बार ले आओ. माइनस, you know, derivative of x square plus 1 equal to what? Twice x. Okay, क्या लिख सकता हूँ? We know that ddx of x square plus 1 equal to what? Twice x. उसमें क्या लिख सकता हूँ? d of x square plus 1 equal to twice x into dx. I hope you are understanding. Yes or no? तो उसमें हम क्या करेंगे? एक चीज़ कर लेंगे, उसमें 2 बनाएंगे. माइनस तो ले लिया, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है? ट्वाइस एक्स लिख दिया, तो ज़्यादा 2 लिख दिया, बाहर हाफ लिखो, हाफ एंड 2 विल बी कैंसल इंटू डी एक्स डिवाइड बाई व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 1. ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप which equal to log modulus x minus 1. Now this twice x dx, this twice x dx can be written as d of x square plus 1 माइनस हाफ है, d of x square plus 1 divided by what? x square plus 1. ठीक है? If you see, if you suppose that this is z, then it will be z. So dz by z is equal to what? Log modulus z. Okay, so this particular expression, this type of problem I have solved in the previous classes also. So log x square plus 1. Now see, x square plus 1 is what? Why we give modulus? Modulus देने का मतलब है log को define करना. You know, log x is defined when x is positive. ये positive होना चाहिए. log के अंदर जो चीज़ होगा
ये पॉजिटिव होना चाहिए। और मॉडुलस देने का मतलब क्या है, जब हम मॉडुलस देते हैं व्हाट एवर विद द एक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉडुलस ऑफ एक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स वाई टू मेक लॉग डिफाइन व्हाट विल डू, हम क्या करते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। बट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यू सी एक्स इज एनी रियल नंबर, वट एवर विद द रियल नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो उसमें मॉडुलस देने का ज़रूरत नहीं, सीधा ब्रैकेट लगाओ। मॉडुलस तब देता है जब पॉजिटिव बनाने के, बिकॉज ये तो पॉजिटिव ही है, तो उसमें मॉडुलस देने का कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 एंड व्हिच इज ग्रेटर देन 0, yes or no? So find a plus c. So this is your final answer. ठीक है, so in such type of problem when denominator is expressed in terms of linear into quadratic, is factorized into linear into quadratic, and you have to solve such type of problem, and to find the constant a b c, there are method. First you put the value of x for which that is bx plus c becomes term containing should 0, and then putting x equal to 0 and then comparing the coefficient of x square. This rule you have to apply and it will be very easy. देखो इंटीग्रेशन में खुद का एक टेक्निक डेवलप करो. If you develop your own technique to remember the things, then it will be very easy for you. You cannot memorize everything. फॉर्मूला तो कुछ है, उसको बार बार यूज़ करोगे, प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, याद में रह जाएगी. Okay, so I hope I solved some few important problems to make aware of you to develop your capacity in solving the problems. Okay, and how to use the method of partial fraction in integration. Okay, now one particular problem I will solve and finish the class. Suppose that the question is suppose x square by x square plus 1 into x square plus 2 dx. Okay, understood? Everywhere x square is there. Understood? Now you see this is a quadratic term, this is a quadratic term, तो x square into x square क्या होगा, x to the power 4 होगा. x का पावर जितना होता है इतना ही कांस्टेंट लेना पड़ता है. तो हाउ मेनी कांस्टेंट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस व्हाट, 4 कांस्टेंट. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 4 कांस्टेंट. जितना ज़्यादा कांस्टेंट होगा प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा. तो इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाट वी विल यूज ए टेक्निक हियर टू रिड्यूस द पावर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ कांस्टेंट एंड देन अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेंड है उसको हम बाहर ले आएंगे. ओके, we take let x square equal to y. Suppose ये सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा हो, क्योंकि x स्क्वायर इज इक्वल टू y लेने के बाद क्या होगा, ट्वाइस एक्स dx इज इक्वल टू dy होगा. ट्वाइस एक्स तो इधर कुछ नहीं है, तो सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं कर सकते. तो इसमें हम सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ x स्क्वायर जो टर्म है उसको y से सब्सटीट्यूट कर दिया है. सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या होगा, जो इंटीग्रेंड है, द इंटीग्रेंड क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2. ये जो इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रेंड क्या बन रहा है, देखो. तो एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, वाई बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2. वेरी इंटरेस्टिंग. उसी नाउ नीचे वाई का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, तो कांस्टेंट कितना है, उसको अगर ये भूल जाओ, यही है आपका फोकस पॉइंट, राइट. दिस इज योर फोकस पॉइंट. हाउ टू रिजॉल्व दिस रेशनल पोलिनोमियल फंक्शन इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. दिस इज द फर्स्ट रूल. ओके, denominator is product of two distinct factor. तो आराम से इसको क्या लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू व्हाट, a बाई वाई प्लस 1 प्लस b बाई वाई प्लस 2. आपने सपोज किया है तो इसमें आप लिखिए से. अर्लियर प्रॉब्लम में हम क्या यूज़ करते हैं, लेट. वी स्टार्ट विथ लेट, तो इसमें हम कुछ नहीं किया, तो से मीन्स व्हाट, यू सपोज इट. ओके, नाउ उसको मैंने कहा है भूल जाओ, तो आप वहाँ से दिस इक्वल टू दिस, उसका न्यूमरेटर क्या है, y. देयरफॉर y इक्वल टू, इसमें न्यूमरेटर क्या होगा, a इंटू वाई प्लस 2, a इंटू वाई प्लस 2 प्लस b इंटू वाई प्लस 1. ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड द कांस्टेंट a एंड b. ट्राई टू फाइंड द कांस्टेंट a एंड b. ठीक है,
To find the constant a, you have to put this term 0. How to put this term 0? Putting y equal to -1. I'm not going to explain. Already such type of problem you have solved. Putting y equal to -1 and it will be left hand side is -1, right hand side क्या होगा -1 plus 2a. So finally a equal to what? -1. Okay. Now putting, to make this term what 0, you have to find the value of b. तो उसको 0 बनाने के लिए y equal to -2 पुट करो. पुटिंग y equal to -2 पुट करने लेफ्ट हैंड साइड इज -2, राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, ये तो 0 हो जाएगा. -2 + 1 इज इक्वल टू -b. -2 + 1 -1, राइट. b इक्वल टू what? 2. ओके. Therefore what is your partial fraction? पहले partial fraction. Therefore y by y plus 1 into y plus 2, ये क्या हो रहा है? Ultimately ये हो रहा है, what is the a is equal to what? Minus. So it becomes what? -1 by y plus 1 and this b is equal to 2 by y plus 2. Okay. Now we are going to do integration. इसमें integration नहीं लगाएंगे, ठीक है. हम पहले y क्या लिया था? We have taken y is equal to what? x square. रिप्लेस करें y equal to x square. Replace करो y equal to x square. So which implies x square by x square plus 1 into x square plus 2 equal to -1 by x square plus 1 plus 2 by x square plus 2. ओके. अभी सारी चीज़ क्या हो गया? x स्क्वायर में x में आ गया, ठीक है. और ये हमारा फाइनल क्या है? रिजॉल्विंग द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इनटू ए पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ इंटीग्रेशन ले रहे. इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx plus 2 by integration 1 by x square plus √2 whole square dx. लिख सकता हो कि नहीं? तो फाइनली व्हाट यू कैन y में क्या क्या हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया एंड देन फाइनली पुट द वैल्यू ऑफ y, विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल इंटीग्रेंट एंड इसके बाद उसको इंटीग्रेशन कर लिया. dx लिखाओ, dx लिखो and finally you do integration, then integration will be separated. And now what formula you are going to apply? Very easy formula. This is integration dx by x square plus a square 1 by a tan inverse x by a. What is the value of a here? 1. तो it 1 by 1 into tan inverse x by 1 means क्या होगा? tan inverse ही x होगा. तो इसका आंसर क्या है? माइनस tan inverse x प्लस, एंड इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करें, क्या होगा? 2 तो है. 1 by a means 1 by √2 tan inverse x by a means x by √2 plus c. सो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाए तो फाइनली tan inverse x plus √2 into tan inverse x by √2 plus c. This is the final answer. Okay. So this is a little different type of problem. This is a different type of problem. आपको अगर ऐसा कोई टर्म मिले जैसे जो प्रॉब्लम में मैंने किया है, एक्स स्क्वायर ऊपर में नीचे सब टर्म में एक्स स्क्वायर है, देयर इज़ नो टर्म अदर देन एक्स स्क्वायर, ओके, इन द पर्टिकुलर रैशनल पॉलिनोमियल फंक्शन. तो उसको आप रिड्यूस करके सिंपल बना सकते हैं. इसके बाद उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फाइनली व्हाट विल डू? फाइनली विल डू द इंटीग्रेशंस. Okay, so majority of the problem I have solved. Few problems are remaining. You have to go through the exercise and do your, also some more important examples are there. I will discuss 1-2 examples in the next class and complete the chapter. So thank you very much. And also my appeal to everyone, please subscribe my channel and share my videos, and also that is press the bell icon such that whenever there is upload a video, you goes to immediately you will see in your YouTube channels. Okay, so thank you very much. Thank you.